हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स कैंपस ओडिशा। सो पिला माने आज आमे 4th सेमेस्टर रो गोटे नुआ सब्जेक्ट स्टार्ट करिबा जा ना होची मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तार फर्स्ट यूनिट नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग माने कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग which is developed or invented due to the limitations of both financial accounting as well as cost accounting। तो कौन है ची हमर जो बिजनेस स्टार्ट हैला फर्स्ट रे हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो रिक्वायरमेंट आसला। तो बिजनेस इन्वेंशन हैला पारे हमें फर्स्ट इन्वेंट करले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन पे इन्वेंट करले? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेंट करिया द्वारा हमें सब ट्रांजैक्शन रो रिकॉर्ड करले, प्रॉफिट लॉस जानिले, फाइनेंशियल पोजीशन जानिले, हमरो डेटर केते क्रेडिटर केते जानिले, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दबारे सुविधा हला। ए सब जिंसो पे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेंट करले। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जेति की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करला और जेति काम करला सेति की बिजनेस पे सफिशिएंट हला। तो जेहेतु फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस रो पूरा को पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करि पल्लानी सेहि पे हमें इन्वेंट करले कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting was the second branches of accounting which was invented due to limitations of financial accounting। ठीक अछि हेले cost accounting रो काम कोन? cost accounting रो काम हला calculation of cost or ascertainment of cost, cost control, cost reduction, preparation of budget etc। ए सब काम किए करला? cost accounting करला। cost accounting द्वारा हमें गोटे प्रोडक्ट बा सर्विस रो केते कॉस्ट होई छि जानि पारले, आमे कौन कले कम कॉस्ट रे गोटे प्रोडक्शन हेई परिबो, सर्विस प्रोवाइड हेई परिबो ताको आमे देखि पारले, बजट प्रिपरेशन करि पारले, एस्टिमेटेड कॉस्ट रिकॉर्ड करि पारले, सेलिंग प्राइस फिक्सेशन करि पारले। ए सब जिंस उडा को फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे हो नथला। तो सेत में कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वेंट करले। तापर जेतलो बिजनेस ग्रो हला, बिजनेस डेवलप हला, आमे देखिले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ कॉस्ट अकाउंटिंग जति की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करू चंदी, जति की जिंस रिकॉर्ड करू चंदी सेति की सफिशिएंट हलानी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को आउ किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दरकार पड़ला। से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किए प्रोवाइड करिवो सेहित पई गोटे एक्स्ट्रा ब्रांचेस को डेवलप करा गला जाउ कहउछन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द थर्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग व्हिच वाज इन्वेंटेड ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मिसी की कोन करले जहा रिक्वायरमेंट सेति की फुलफिल करि पाले नि बिजनेस रो सेहि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वेंट करा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इन्वेंट करा गला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन रहला ना रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर सम स्पेशल रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइड टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा। सेत पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमें मैनेजरियल अकाउंटिंग बोली कहउछे बिकॉज़ इट हेल्प टू मैनेजमेंट by providing the right information at the right time for taking the right decision। ठीक अछि। तो what is management accounting? Simply कहले management accounting is one of the branches of accounting which was invented due to the limitations of both financial accounting as well as cost accounting। It act as a mediator between the financial accounting and cost accounting and the management of the business। Okay, तो मु नोट्स से कोन देछि प्रथम रे इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग केमिति इवैल्यूएशन हला? प्रथम रे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हला। तो बिजनेस माने कोन? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जेटा के ट्रांजैक्शन होली कहउचे। तापरे बहुत डिफिकल्ट हेला, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शंस हैपेंड इन द बिजनेस, डिफिकल्ट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, डिफिकल्ट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, डिफिकल्ट टू नो द डेटर एंड क्रेडिटर। एमती बहुत इंफॉर्मेशन हमें पाई पारलेनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हला पारे, जोथि फल रे कि हमें कोन करले हमें इन्वेंट करले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ए सब प्रॉब्लम जाको सॉल्व करे जाय कि हमें इन्वेंशन करले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग माने कोन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए बिजनेस ऑपरेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ता माने गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे जहां भी हमर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होची से सब को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेडा को हमें कोन बोली कहउचे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोली कहउचे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन? माने से कोन हमको सुविधा करेगा? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमर डेटर केते, क्रेडिटर केते, बैंक बैलेंस केते, कैश बैलेंस केते, केते पेमेंट करे अछि, केते रिसीवर अछि, आज रे केते रिसीवर, ए बहुत गुडे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करला। तो एतिके सब काम किए गला? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कला, प्रत्येक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करला, प्रॉफिट लॉस जणैला, फाइनेंशियल पोजीशन जणैला। ए सब काम करि पाला के? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जेटा के फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तापरे आर कोन सब लिमिटेशंस होइला? नीड नॉट रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डाटा। एस्टिमेटेड डाटा रिकॉर्ड करि पालानी। आम गोटे घर तैयारी करा जाउचे, केते पैसा खर्च हबो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहि परिबोनी। घर तैयारी हे सला पर केते पैसा खर्च हबो फाइनेंशियल अकाउंटिंग
कहीदब तार एस्टिमेटेड डाटा से रेकर्ड कर पारानी ठीक अच्छे एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल इन एडवांस गोटे काम कला पूर्व केते खर्च हम जानि पालेनी कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल फिक्सेशन ऑफ प्राइस इज नॉट पॉसिबल ये सब काम जगह में कर पालेनी काहे रे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जोति फल कि आम कौन कले इन्वेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो सेकंड ब्रांच कॉस्ट अकाउंट कौन आमर सेकंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग आम कौन कहूचे सेकंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कहूचे आम सेकंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को इन्वेंट कले ठीक अच्छे तो सेकंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो जोड़ा थिला कॉस्ट अकाउंटिंग ता माने कौन कॉस्ट अकाउंटिंग is a branches of accounting that involves recording analyzing and reporting company's cost को record करबा cost को analyze करबा cost information provide करबा ए सब काम होची कार cost accounting आ cost accounting रो काम कोन ascertainment of cost को ascertainment करबा cost control and cost reduction price fixation ए सब काम जगह होची कार cost accounting limitations of cost accounting the cost accounting on limitations होला not helpful for analyzing the information को analysis करि पलानी information provided by financial accounting and cost accounting are not sufficient for management for decision making and controlling जेति की information provide करले के financial accounting और cost accounting सेति की information sufficient हलानी काउ sufficient हलानी management को decision को control करिया को management करिया सेहित में आमे इन्वेंट करले मैनेजमेंट अकाउंटिंग जोटा हम कहजे थर्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ठीक अछि एटा होची थर्ड ब्रांचेस तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग इट इज अ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दैट क्रिएट्स स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट हेल्प द मैनेजमेंट इन मेकिंग बेटर डिसीजन रिलेटेड टू देयर बिजनेस परफॉर्मेंस ता माने हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजरियल अकाउंटिंग बोली कहउचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन करूचे सिंपली कहया गले देखो हमर रहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रहला ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग रो इंफॉर्मेशन को नोची के नोची आरो इंफॉर्मेशन को नोची मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन करूची किछि नुवा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके टॉप मैनेजमेंट को दोची का दोची टॉप मैनेजमेंट को दोची ठीक अछि टॉप मैनेजमेंट कौन करूची एई जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करला मैनेजमेंट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन को नेकी से कोन करछि डिसीजन नउछि कंट्रोलिंग करछि मैनेजिंग करछि प्लानिंग करछि ऑर्गेनाइज करछि बाकी सब काम करछि ठीक अछि तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग रो को इंफॉर्मेशन नला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट शीट से सब जानला ये कोन प्रिपेयर करिवो ये रेशियो एनालिसिस करला ठीक अछि ये फंड्स फ्लो स्टेटमेंट करला ये कैश फ्लो स्टेटमेंट करला ठीक अछि ये वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करला ठीक अछि आ कोन कर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट करला आ कोन करला ये कॉमन साइज स्टेटमेंट करला ये ट्रेंड एनालिसिस करला ए सब जा के करछि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करछि तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोन करछि एई जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एते सब जक पार्ट रे एनालिसिस करिकि प्रोवाइड करछि टॉप मैनेजमेंट को ए सब जिंस ओडा हेल्प होछि का टॉप मैनेजमेंट ना टॉप मैनेजमेंट को हम जर्नल दे दा ओडा लखे पेज से कोन जर्नल देखि डिसीजन नै परियै रे नहीं पारे नहीं तो से सब को फिल्टरिंग करके एनालिसिस करी जो इनफॉरमेशन प्रोवाइड करले मैनेजमेंट को सुविधा हबो से इनफॉरमेशन प्रोवाइड करू के मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम कोन लिखौ छे मैनेजरियल अकाउंटिंग बोले कहौ छे एबे मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन क्रिएट स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ये किसी स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करू एनालिसिस ऑफ इनफॉरमेशन फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग रो इनफॉरमेशन एनालिसिस करू प्रोवाइड इनफॉरमेशन टू टॉप मैनेजमेंट जहां भी इनफॉरमेशन आसिला से सब को टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करू एबे देखिया डिटेल जिंस एबे जे हमें खाली जस्ट देखले कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किम देसले कोन आसला इन्वेंशन किम तेला फर्स्ट नंबर बिजनेस इन्वेंट हला बिजनेस रिक्वायरमेंट आसला रिक्वायरमेंट सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेंट हला फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करि पल्लानी तापर इन्वेंट हला कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस आउरी डेवलप करला कॉस्ट अकाउंटिंग भी पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करि पल्लानी तापर इन्वेंट हला मैनेजमेंट अकाउंटिंग एडा होछि लॉजिक एबे डिटेल देखिया व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग Management accounting is also known as managerial accounting and can be defined as a process of providing financial information and resources to the managers for better decision making and controlling of business activities. Management accounting is only used to the internal team of the organization and this is only thing which make it different from financial accounting. Financial accounting में जहाँ भी information prepare करूचे ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बैलेंस शीट जहां भी करछे से सब जा कोन होउची पब्लिकली अवेलेबल होउची आमे चाहिबा आमे होचे मनर पब्लिक आमे चाहिबा जे कोनोसी बिजनेस रो भी बैलेंस शीट पीएल अकाउंट देखियो चाहले इंटरनेट रे मिलि जिवो
किंतु ताकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनफॉरमेशन मिलिबो नाही हमकु तो हमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनफॉरमेशन को माने यूज करंदी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर इंटरनल यूजर माने कोन मैनेजमेंट एम्प्लॉई हला मैनेजमेंट एम्प्लॉई ओनर एमन होचंदी कोन सब इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर माने क्रेडिटर डेटर बैंकर इन्वेस्टर गवर्नमेंट रिसर्चर एमन सब होचंदी कोन पब्लिक एक्सटर्नल तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंटरनल यूजर भी यूज करचंदी एक्सटर्नल यूजर भी यूज करचंदी बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ओनली इंटरनल यूजर ही यूज करिवे बेसिकली मैनेजमेंट ही यूज करिवो आ के यूज करिवो नाही आमे कोन कहया गिरे तो रेशनलिस्ट हम दे बोली कहया गिरे ना हमें तुमको ट्रेडिंग अकाउंट पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस शीट बा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दो तुम जहां बुझिलो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पब्लिक पाई किंतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज करियो केवल मैनेजमेंट ही यूज करियो सेथ में इट इज मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग that the information provided by financial accounting is used by internal as well as external users but the information provided by management accounting is only used by the management of the business. In this process, financial information and reports such as invoices, financial statements are shared by the finance administration with the management accounting team of the company, and management accounting team analyze the financial information, prepare special reports and statements and provide these report and statement to the management for decision making and controlling the business activities. Clear? Same जिनिस लिखा है जोड़ा मैं कहली कि एडी कोन करा होची फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तारो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे दोगा गो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कोन करिवो एनालिसिस करिवो स्पेशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करिवो से रिपोर्ट्स को मैनेजमेंट को दबो मैनेजमेंट को सुविधा हबो कंट्रोलिंग प्लानिंग डिसीजन पे ठीक अछि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बोस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ता माने इफेक्टिव मैनेजमेंट में प्रॉपर मैनेजमेंट करिया पे ठीक से मैनेजमेंट करिया पे हमहु जो अकाउंटिंग दरकार पड़छ सेडा होछि मैनेजमेंट अकाउंटिंग according to Robert Anthony management accounting is concerned with accounting information that is useful to management ता माने मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन दरकार पड़ो से इंफॉर्मेशन को जे प्रिपेयर करछ ताको हमें कोन लिखौछे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोली कहौछे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो कैरेक्टरिस्टिक कोन नंबर 1 it is a both science as well as art management accounting is both science as well as art because it fulfills the characteristic of both science as well as art साइंस माने कोन साइंस मींस जो थ्रे कि रूल्स रेगुलेशंस फार्मूलास मेथोडोलॉजीज थिबो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस थिबो सेडा को हम कोन साइंस बोली कहउचे आर्ट मींस व्हिच कैन बी अप्लाइड इन प्रैक्टिकल फील्ड जति हम प्रैक्टिकल फील्ड रे यूज करि पड़छे जिनि कि हमरो पर्सनल स्किल पर्सनल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पर्सनल जजमेंट से सब जगह हम यूज होछि जेटा हम आर्ट बोली कहउचे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुलफिल्स बोथ द फीचर्स ऑफ साइंस एज वेल एज आर्ट सो इट इज कॉल्ड एज साइंस एज वेल एज second hoche accounting service management accounting provide the accounting service to the management so we can say that management accounting is a accounting service which provides service to the top management for controlling and decision making next hoche integrated system means what management accounting is an integrated system in which technique related to various subjects are used in the process of data collection analysis and decision making that means it integrate करछि सब जगह इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करि से कोन करछि टॉप मैनेजमेंट को दोछि जो कि कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग पे हेल्प होछि मोर कंसर्न विथ फ्यूचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब बले पास्ट को कंसर्न होछि कोन हेयला सेटा से रेकॉर्ड करियो पेमेंट हेयला रिसीव हेयला जोडा हेयला रेकॉर्ड करछि सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स ओनली द हिस्टोरिकल डाटा सो फाइनेंशियल अकाउंट कंसर्न विथ ओनली पास्ट इंफॉर्मेशन बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली कंसर्न विथ फ्यूचर माने हम जहां भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करबा से सब इंफॉर्मेशन को नै कि मैनेजमेंट को करियो फ्यूचर पे डिसीजन नबो फ्यूचर पे कंट्रोलिंग करियो सो इट इज मोर कंसर्न विथ फ्यूचर सिलेक्टिव इन नेचर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब जगह इंफॉर्मेशन को नै कि दोनी टॉप मैनेजमेंट ये सिलेक्टिव करूची जोडा दरकार सेडा नै कि दोची जोडा दरकार नै सेडा नै कि दोनी सिट पे इट इज अ सिलेक्टिव इन नेचर इट डजंट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट ओनली द सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग द डिसीजंस दैट आर प्रोवाइडेड टू द टॉप मैनेजमेंट more emphasis on the nature of element of cost more emphasis on the nature of element of cost माने कोन ना आमे जो different variety of cost अछि according to element cost can be classified into material cost labor cost and other expenses by overhead से सब cost गुडा किमिति कोन मैनेज करले हमर cost कम हे परबो properly cost management हे परबो ताको भी ध्यान दोछ के मैनेजमेंट अकाउंट cause and effect relationship कोन करले कोन हबो आमे को डिसीजन लेले कौन हमको रिटर्न मिलिबो सेटा को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोली कहउचे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो कंसर्न्ड विथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वेरियस डिसीजंस सप्लाई इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजंस
Management accounting will only provide the information to the top management, but it will not take any decisions. Decisions should be taken by the top management. But management accounting team only provide the right information, the right time to the right person for taking the right decisions. ता माने कोचिंग ये decision नोच दी, ये खाली information दे दोचे, बाकी decision नवा काम करो top management. Achieving of objective, ता माने ये कौन कोचे organization जो objective रहला, से objective achieve करे अपन ये help कोचे top management. Next is the scope of management accounting. Scope माने कौन area to be covered. Management accounting को area को cover करते शेड़ा को कहते हैं scope of management accounting. The scope of management accounting is very vast nowadays due to the growth and development of business. Business that the development of growth होची आनरो कौन scope से ते बड़ी जाऊची. तो scope माने area to be covered को area cover करते देखो number one financial accounting. So management accounting cover the financial accounting because it receive the information from the financial accounting, analyze the information provided by the financial accounting and prepare special reports. Second is cost accounting. Management accounting is also related with cost accounting because it receives the information from the cost accounting also, like cost sheet and other informations, budgets, which are again analyzed by the management accounting. So कौन बोला रहे management accounting financial accounting से तो related होगा, cost accounting से तो related होगा, financial management team से तो related होगा, because management accounting provides certain information to the financial management team so that they can take the financial information, financial decisions correctly. Budgeting and forecasting, management accounting budgeting and forecasting रे भी कौन बोलची help करूची. तो किमिति हमें फ्यूचर फोरकास्ट करिया पाई डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. टॉप मैनेजमेंट कैन फोरकास्ट माने कोन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कोन हो, नेक्स्ट ईयर कोन हो, ता नेक्स्ट ईयर कोन हो. बजेटिंग फोरकास्टिंग करिया भी हेल्प करछि के मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इन्वेंटरी कंट्रोल हमें केते इन्वेंटरी रखिया दरकार, केते काटू कम रखिया दरकार, काटू अधिक रखिया दरकार, सेते भी हेल्प करछि. स्टैटिस्टिकल मेथड्स ये केते ओडे स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करछि, ग्राफ्स यूज करछि, ट्रेंड एनालिसिस यूज करछि. इंटरिम रिपोर्टिंग माने हमर केवल वर्ष शेषु की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी एज एंड व्हेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट सेतलो से प्रोवाइड कर जेतलो इंफॉर्मेशन दरकार सेतलो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर. फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली वर्ष थरे प्रोवाइड करछि किंतु ये वर्ष थरे नै एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जोटा हम कहउछे इंटरिम रिपोर्टिंग. तापर होछि टैक्सेशन रे भी ये की कोन करले हमर टैक्स कम पडिबो ताको भी हेल्प करछि. टैक्स मैनेजमेंट जोटा कहउछे. ऑफिस सर्विस किंदी कोन करले ऑफिस सर्विस ठीक सही पारिबो, हम कस्टमर माने प्रॉपर सर्विस पाइ पारे ताको भी ध्यान दोछि. इंटरनल ऑडिट रे भी ये हमको हेल्प करछि. सो दीस आर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. दैट मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग डीलिंग विथ ऑल दोस एरियाज व्हिच आर डिस्कस्ड जस्ट नाउ. तापर असला ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन ऑब्जेक्टिव कोन? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होछि पॉलिसी फॉर्मुलेशन. पॉलिसी फॉर्मुलेशन माने रूल्स एंड रेगुलेशन करियाबा. तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन किए करूची? टॉप मैनेजमेंट करूची. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ एमाने पॉलिसी फॉर्मुलेशन करूचोनी. पॉलिसी फॉर्मुलेशन करिया पाई बोली तांको जो इन्फॉर्मेशन दरकार किए प्रोवाइड करूची? मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करूची. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्प टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट होची हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम. हेल्प इन कंट्रोलिंग. Management accounting is helpful for controlling the business activity by the top management by providing the information required by the management. Motivation. Management accounting is also provide motivations to the different departments for which they can give their best efforts for achieving the organizational objective. Interpretation of financial information. Interpretation means after analyzing the information, getting the conclusion is called interpretations. So management accounting analyzing the information providing by the financial accounting and it gets the conclusion or understand the things which is exactly happen, that is called interpretation of the financial information. Then reporting means provide the information to the top management, that is called reporting माने कौन रे information provide करेडा होता है मैं reporting बोले कहूचे. helpful in coordination ता माने ये coordination different department रे coordination maintain करियार भी help होचे. ठीक अछि. आज क्लास से देखता हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम देखिए रोल, इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. थैंक यू वेरी मच.